selector. So basically selectors are used to select the content you want to style. Like in our previous example, the content is hello. So we have to select that hello, but with the help of tags or some other elements. Okay, because we have different elements. So we can say that the selectors basically are the part of CSS rule set. And selectors basically select the HTML elements according to its ID, class, type, group, attribute, etc. etc. There are basically different types of selectors. Like you can see here, the first one is the CSS element selector. The next one is ID selector. Third one is class selector. Fourth one is universal selector. Fifth one is group selector. And the final is attribute selector. Now come to the element selector. Element selector basically selects the HTML element by name. By name meaning is that we element selector basically also known as type selector. That means the type of tag. जैसे हम पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं तो पैराग्राफ टैग का टाइप क्या है पी, हेडिंग का टाइप क्या है H1, इनपुट टाइप का टैग इनपुट का क्या है इनपुट टाइप टैग यूज करते हैं इनपुट। तो ऐसे ही जो भी हम टैग यूज कर रहे हैं उसके अगर नाम से हमको कोई सीएसएस डिफाइन करनी है तब हम यूज कर सकते हैं एलिमेंट सिलेक्टर को। तो देखिए यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है, दो पैराग्राफ डिजाइन कर रखे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हेलो एंड सेकंड पैराग्राफ इज गुड मॉर्निंग। हमने क्या किया, यहाँ पे सीएसएस दोनों चेंज कर दी कि अब जितने भी पैराग्राफ हैं उनका टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, और जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। लेट्स सी दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक हेडिंग भी डिजाइन कर रहा हूँ, हेलो। ये देखिए, ये जो हेलो है ये हेडिंग टैग था जिसके ऊपर हमने कोई सीएसएस अप्लाई नहीं करी, इसलिए ये डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है। ये वो दो पैराग्राफ है जिनके ऊपर हमने सीएसएस अप्लाई की है। बाय डिफॉल्ट मैंने पहले बताया था आपको, एचटीएमएल में जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट में होता है, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं। एचटीएमएल के अंदर हमने सेंटर टैग इस्तेमाल किया था, बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। Text hyphen align is the name of property, and after colon we will write center. That means center is the value and with color blue. तो यहाँ पे देखिए ये क्या टेक्स्ट अलाइन, तो यानी कि if anyone asks you how we can align the text center left or we can say right, then you can use center text align property. Now they will align to right side. Okay, like this you can use this property. Now we have two more properties. Now similar example with another properties. But for this I'm again defining some other thing. For this I'm defining h1 tag so that we can easily differentiate between letter spacing and word spacing. For a paragraph I am using letter spacing property, and for heading tag I am using word spacing property. Okay, word spacing means that the space between words, यहाँ पे हमारे कितने वर्ड है, गुड एंड मॉर्निंग, तो इन गुड और मॉर्निंग के बीच में हमें कितना स्पेस चाहिए। इफ यू वांट टू प्रोवाइड स्पेस बिटवीन गुड एंड मॉर्निंग देन वी कैन यूज word spacing property, and if we want to provide space between each alphabet like H, E, L, L, O, G, O, O, D, then we can use letter spacing property. Here you can see. Now
I'm writing this 10px. Okay. Now here you can see. See just hello. Yeah. Space is increased. Now I need to provide a space between good and morning. Good and morning. 15. Now you can see. Morning is shifted. Like this, you can use letter spacing and font spacing property. Now we have font properties. Here I'm using font property with element selector. We have a two paragraph. For both paragraph, I'm just defining font size is 4 pixel, font weight is 5 pixel. Font weight basically if you want to provide the bold text or if you want to provide some more bolder, then you can use bolder value also. But if you don't want to use values, then you can use numeric values also. Okay, here you can see here. Here you can see because I need to increase the size, that is 40 pixels. Now it is in bold with italic. Suppose if I am removing this font with bold, then what will happen? Now you can see the difference. But if I write this, then you can see difference. Now I'm providing 25 pixels. Now you can see. I can also write here bold. And it is in the complete bold form. You can also write here bolder with bold. So you can use properties like this. Suppose if I'm writing removing both, then what will happen? Now no bold, no italic. Like this, you can use this element selector with different properties.